personal treasury and pulled out special gems and said, okay, we're giving them away. तो कुछ इस तरह से है कि भगवान अपनी व्यक्तिगत तिजोरी में के पास गए, उसे खोला, उसमें से कुछ हीरे भगवान ने निकाले और कहा हम इसको फेंक रहे हैं, बांट रहे हैं. So this verse says the two gems that he gave was swaprema and namamrita, love for himself, prema for himself, and the nectar of the name. तो जो दो हीरे विशेषकर निकाले वो इस श्लोक में विदित होते हैं कि एक तो भगवान ने स्व प्रेम दिया, यानी अपना खुद का प्रेम दिया, और दूसरा नाम का अमृत भी दिया. So now we have this interesting situation. तो अभी ये बड़ी एक रोचक स्थिति है हमारे सामने. You have two very contradictory things going on simultaneously. दो विरोधाभास वाली चीजें एक साथ चल रही हैं. A mantra that's going to give something it's going to give love in the mood of the gopis. So it's going to give a result which is the highest possible result any mantra can give. तो एक तरफ तो मंत्र है जो आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ या उत्कृष्ट वो प्रेम देने वाला है जो कि गोपियों में पाया जाता है. No mantra or no other process is going to give this. कोई और मंत्र और कोई और विधि ये चीज नहीं प्रदान कर सकती. It is the highest possible achievement that any human being could achieve. That's what comes through the Hare Krishna mantra. कोई भी व्यक्ति चरम सिद्धि जो प्राप्त कर सकता है वो यही है, और ये इस हरे कृष्ण महामंत्र से प्राप्त होती है. And the most unusual thing about this is that logically you would think this being true, it would only be given to people who were qualified to use it, to handle it. अब अगर आप तर्क के हिसाब से सोचें तो आपको ऐसा लगेगा, अरे अगर ये इतनी कीमती बेशकीमती चीज है तो ये तो सिर्फ उन्हें ही दी जानी चाहिए जो वाकई इसके लायक हों. But on the contrary, it's given to people who have no qualification for it, who don't even deserve it. पर ये कैसी अजब बात है कि ये दी उनको जा रही है जो बिल्कुल भी लायक नहीं है. सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज सबसे नालायक लोगों को मुफ्त में बांटी जा रही है. And all they have to do is ask for it and they get it. That's the price. और उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कहना है हमको भी जपना है, यही कीमत है, थोड़ी श्रद्धा बस. It's like you read in the newspaper, some jeweler is saying, we're giving out gold and diamond rings, and all you have to do is come to the store and ask for it, and then we'll give it to you. ये कुछ ऐसा है कि मान लीजिए अखबार में कोई विज्ञापन निकले कि हम कोई सोनार आपको कहे कि आइए हम हमारी दुकान से सोने और हीरे जो है बांट रहे हैं, आपको सिर्फ इतना करना है, आकर मांगना है. So ordinarily those rings are very expensive, and now they're giving them out for free. And if you're wealthy, don't come. Only if you're poor, come and we'll give them to you. सामान्यतया इस तरह के ऑफर आते नहीं हैं, और अगर ये इसमें और एक बात है कि अगर आप धनी हैं तो मत आइएगा, हम आपको नहीं देंगे, ये सिर्फ गरीबों के लिए है. Now, it's not that Krishna is not merciful. Krishna is very merciful. ऐसा नहीं है कि कृष्ण दयालु नहीं थे, कृष्ण बहुत दयालु हैं. No question. इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता है. And if you study Krishna's mercy, you will see his mercy is very vast. यदि आप कृष्ण की दया का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि कृष्ण की दया बहुत विस्तृत है, very deep, very great. बहुत गहरी भी है और बहुत गंभीर भी है. But Mahaprabhu's mercy is even greater. लेकिन महाप्रभु की जो दया है वो और भी अधिक महान है. And so naturally the question comes, why would Mahaprabhu give something so great to those so unqualified? तो अब ये प्रश्न फिर से उठता है कि सबसे महान चीज जो है वो महाप्रभु सबसे अयोग्य लोगों को क्यों देते हैं? And you know the answer? क्या आपको उत्तर पता है? Very simple. बहुत सरल उत्तर है. Because he wanted to. क्योंकि वो देना चाहते थे, बस.
You know, whenever you ask, why did Krishna do this? That answer always is at least one answer, because he wanted to. तो ये प्रश्न कई बार आता है कि ये कृष्ण ने क्यों किया, तो अनेक उत्तरों में से एक उत्तर यह हमेशा निकल के आता है क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी इसलिए किया. And why something so great? और इतना, you said महाराज ग्रेव और ग्रेट? Great. ग्रेट. इतना महान क्यों किया? Because he can give something great. That's why he gives something great, because he has something great, and therefore he can give something great. He's able to do it. बता रहे हैं यहाँ पर कि कृष्ण महान चीज दे सकते हैं क्योंकि वो महान हैं और उनके पास महान चीजें हैं. क्योंकि उनके पास हैं, उनकी इच्छा है और वो उनके पास सामर्थ्य है, तो वो दे सकते हैं. So I want to read something from a lecture by Srila Prabhupada. तो मैं श्रीला प्रभुपाद के एक लेक्चर से आपको कुछ पढ़ के सुना रहा हूँ. Lord Chaitanya's mercy is perpetual. चैतन्य महाप्रभु की जो दया है वो निरंतर है, अविरल है वो. Krishna's name is always the same as Krishna. भगवान का नाम सदैव भगवान कृष्ण के समान है. But in this age, especially, it has got special potency. लेकिन इस युग में ये और अधिक शक्ति के साथ प्रकट हुआ है. एक Because we're all very fallen. उसके पीछे कारण ये है कि हम सब बहुत गिरे हुए हैं, बहुत पतित. We cannot do anything. हम कुछ भी नहीं कर सकते. Because in other words, what Prabhupada is saying, because we're fallen on our own, we can't achieve much spiritually. क्योंकि हम गिरे हुए हैं, मैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करूं तो हम बहुत नीच हैं, हम गिरे हुए हैं बहुत अधिक. तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी अवस्था में हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं ज्यादा. But at the same time, Kevalaya Bhakta, Kevalaya Bhakta, Vasudeva Prayana, simply by bhakti, devotional service, one can become liberated. लेकिन फिर भी सिर्फ भक्तिमय सेवा, सरल भक्तिमय सेवा करने से व्यक्ति अपने आप को छुटकारा दिला सकता है. And then Prabhupada ends by saying, this is a fact, especially in this age. और शिला प्रभुपाद फिर उत्तर देते हैं कि ये एक तथ्य है, एक सत्य है, विशेषकर इस युग में. Yeah. So Mahaprabhu is Krishna, Radha and Krishna, coming to give ultimately what is most dear to him, which is love. तो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी और भगवान श्री हरि का सम्मिलित रूप है और वे पधारे हैं हमें वो देने के लिए जो कि आखिरकार सबसे बड़ी चीज है, और वो है उनका प्रेम. So Krishna wants our love. He doesn't want our obedience. He wants our love. भगवान कृष्ण हमारा प्रेम चाहते हैं, वो हमारा दासत्व नहीं चाहते हैं. More than obeisance, he wants love. प्रणाम करने से भी ज्यादा या कहना मानने से भी ज्यादा भगवान हमारा प्रेम चाहते हैं. So it said in Chaitanya Charitamrita that when Mahaprabhu came, he just decided, I'll open the floodgates of love and I'll give love to everybody. चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है कि महाप्रभु ने कहा कि मैं समुद्र जो है कृष्ण प्रेम का, उसके जो दरवाजे हैं मैं उनको खोल दूंगा और मैं सबको कृष्ण प्रेम में डुबो दूंगा. And so if you read the biographies of Mahaprabhu, तो अगर आप महाप्रभु की जीवनी पढ़ें, that's what you see happening. Everybody's getting love. तो आप यही देखते हैं कि हर किसी को प्रेम मिल रहा है. By seeing Mahaprabhu, by touching him, people were becoming ecstatic. को छूकर.
And we also see that now people become ecstatic through kirtan. और हम अभी देखते हैं कि लोग अत्यधिक आनंदित हो उठते हैं कीर्तन में हिस्सा लेकर। So he's giving his love through kirtan. तो महाप्रभु अपना प्रेम कीर्तन के माध्यम से भी दे रहे हैं। So Prabhupada used to say, तो प्रभुपाद कहा करते थे, we have to understand Mahaprabhu within an historical context. कि हमें महाप्रभु को एक ऐतिहासिक प्रसंग में समझना होगा। And by that he meant to understand how easy Mahaprabhu is making Krishna consciousness available to us. तो उस संदर्भ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस तरह से महाप्रभु हमें कृष्ण भावना भावित बनाते हैं। And how difficult it was in the past to become Krishna conscious. और अतीत में भूतकाल में कृष्ण भावना भावित होना कितना कठिन था। So in comparison to what the other processes were, this process is quite simple and easy. तो अन्य विधियों की तुलना में ये जो विधि है ये बहुत सरल है और आसान भी है। And the other point Prabhupada would make is that without Mahaprabhu, we don't have the qualification to achieve any significant level of spiritual advancement. प्रभुपाद दूसरी बात एक और बताते हैं कि महाप्रभु की इस कृपा के बिना हमारी कोई संभावना ही नहीं है कि हम कुछ अच्छी आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। So Prabhupada often said, if you chant 16 rounds and follow the four principles, you will go back to Godhead in this lifetime. प्रभुपाद कहते थे अगर तुम 16 माला का जप करते हो और 4 नियमों का पालन करते हो तो इसी एक जीवन में तुम भगवत धाम वापस जा सकते हो। So meditate on that for a minute. उस पर थोड़ा ध्यान जगाइए एक क्षण के लिए। This morning I was listening to a lecture by Prabhupada. He said, we have been here in the material world for so long. मैं आज सुबह श्रील प्रभुपाद का एक लेक्चर सुन रहा था और उसमें प्रभुपाद कह रहे थे हम इस भौतिक जगत में कितने लंबे समय से रह रहे हैं। It's impossible to know when it started. असंभव है ये जानना कि ये भौतिक जगत कब प्रारंभ हुआ। And now Prabhupada is saying, this life, by the mercy of the Maha Mantra and Prabhupada's mercy, you can go back to Godhead one lifetime. और अब प्रभुपाद कहते हैं एक जीवन अगर महामंत्र को हम समर्पित कर देते हैं तो प्रभुपाद Meditate on that for a हम while. चले जाएंगे। That I think will explain why we worship Lord Chaitanya. यदि आप इस एक बिंदु पर कुछ क्षण के लिए भी अपना ध्यान टिकाते हैं, थोड़ा सोचिए इस पर, आप समझ जाएंगे कि हम चैतन्य महाप्रभु की पूजा क्यों करते हैं। The result he's giving is impossible to achieve, at least up until now, it was impossible to achieve. जो परिणाम चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से भक्ति करने के आते हैं, आज तक में वो आने संभव नहीं थे। The way it is achieved has never been this simple. जिस तरह से जिस सरल विधि से इसे पाया जा रहा है, ऐसी सरल विधि भी कभी नहीं थी। And a spiritual process of this stature has never been given before to unqualified people. इस उच्च पद का आध्यात्मिक स्तर जो था वो पहले कभी भी इतने अयोग्य व्यक्तियों को इस तरह से नहीं दिया गया। So it's important to recognize that whatever we can get from the holy name is infinitely greater than what we could get from any other spiritual process. तो आप ये बात ध्यान रख लें कि पवित्र नाम के जप से हमको जो असीमित मात्रा में लाभ मिल रहा है
वो किसी भी और आध्यात्मिक पथ के द्वारा असंभव है। And so if someone says, why practice Krishna consciousness? The answer is because the result is infinitely greater than what you could get from any other process. तो यदि कोई ये प्रश्न करता है कि क्यों कृष्ण भावनामृत ही क्यों, तो उत्तर है क्योंकि ये पथ पे असंख्य असीमित मात्रा में फायदा होता है जो कि किसी अन्य आध्यात्मिक विधि का पालन करने से नहीं मिलता। I want to read something else Prabhupada said. This is about Kripa Siddhi. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कृपा सिद्धि के बारे में, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। Sadhana Siddhi and Kripa Siddhi. साधना सिद्धि और कृपा सिद्धि। So Prabhupada's comparing. तो प्रभुपाद इसकी तुलना करते हैं। You're trying to earn 1 lakh of rupees. आप 1 लाख रुपया कमाने का कोशिश कर रहे हैं। That is sadhana. ये साधना कहलाती है। But if somebody is gracious, he can give you. Take 1 lakh of rupees. Don't work hard. लेकिन अगर कोई दयालु है तो वो आकर आपको कह सकता है, ये लो 1 लाख रुपए, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। That is grace. That is kripa. वो कृपा है। हरि हरि। Yeah, you can't translate it. That is grace. That is kripa, because that's the word, right? You are ambitious for 1 lakh of rupees. आप महत्वाकांक्षी हैं 1 लाख रुपया पाने के लिए। And somebody graciously gives you. All right, take it. और कोई कृपा पूर्वक दे देता है, ठीक है, रखो रखो। Otherwise, you earn by your hard labor. अन्यथा That is sadhana. आपको आपकी मेहनत से इसको कमाना पड़ता है, इसे साधना कहते हैं। By association, by sadhana bhakti, you attain perfection, and by grace, you also attain perfection. तो साधना भक्ति के माध्यम से, प्रयास के माध्यम से आपको सिद्धि प्राप्त होती है, लेकिन यही सिद्धि आपको कृपा से भी प्राप्त होती है। Those who are kripa siddhi are more fortunate. लेकिन जिनको कृपा सिद्धि प्राप्त होती है वो और भाग्यशाली होते हैं। So Mahaprabhu is the Kripa Siddhi program. तो महाप्रभु जो है वो इस कृपा सिद्धि कार्यक्रम को चलाते हैं। And so we understand that on our own, we're not going to go very far. तो हमें ये समझना है कि अपने बल पर हम ज्यादा नहीं आगे जा पाएंगे। It doesn't mean that we don't have sadhana and इसका wait for मतलब ये भी kripa. नहीं है कि हमें साधना नहीं करनी है। But it means all the kripa is within the holy name. लेकिन कृपा जो है, सारी की सारी कृपा इस दिव्य नाम में घुसी हुई है। I think another very, very strong evidence of Lord Chaitanya's mercy is, and his love for us, is the fact that he sent so many of his devotees to this planet to help us. एक और मैं सोचता हूँ कि जो बहुत बड़ा ठोस सबूत है चैतन्य महाप्रभु की दया का, वो ये है कि वो इतने भक्तों को इस ग्रह पर भेज रहे हैं। His personal associates. और ये उनके पार्षद हैं जो They've written so many books. सॉरी मारे, They've written so many books. वो आते हैं और वो इतनी सारी पुस्तकें लिखते हैं। Yeah, grantha. ग्रंथ। Yeah. So that's another major aspect of Lord Chaitanya's mercy. तो ये भी महाप्रभु की कृपा का एक बृहद हिस्सा है। And then another aspect is that if you give Mahaprabhu's mercy to other people, then he blesses you with even more mercy than you're giving out. एक अन्य पक्ष और भी है कि महाप्रभु उस व्यक्ति को कृपा और देते हैं जो कृपा को आगे देता है, तो जितनी कृपा वो देता है उससे अधिक कृपा वो पाता है।
So we all have this amazing opportunity to become very dear to the Lord by sharing knowledge of Him with others. तो हमारे पास ये एक अद्भुत अवसर है भगवान का प्रिय बनने का। किस तरह से कि हम उनके संदेश को दूसरों को दे दें। And then what happens when you get that mercy is you become very detached from material life and very ecstatic in your spiritual life. तो इसका ये कब परिलक्षित होता है, कब ये छलकता है? जब वो कृपा आती है तो आप आध्यात्मिक जगत से, आध्यात्मिक विधि से आसक्त हो जाते हैं और भौतिक जो आसक्ति है उससे आपका मन फट जाता है। Much more ecstatic than any practitioner of any process. और किसी अन्य विधि के की तुलना में ये अत्यधिक आनंदमयी है, भाव विभोर कर देने वाली। And that ecstasy is not in proportion to our qualification. It's only of Mahaprabhu. और ये जो कृपा आपको प्राप्त होती है ये आपके कठिन परिश्रम के अनुपात में नहीं है, ये सिर्फ महाप्रभु की कृपा है, अन्यथा उससे कई कई गुना अधिक है। Prabhupada used to say, when we chant, we are ecstatic. प्रभुपाद कहा करते थे, जब हम जपते हैं तो हम भाव विभोर होते हैं। Then one may question, तब कोई पूछ well, सकता है, ecstasy, that's a high stage. That's right before prema. कि भाव वो तो एक बहुत ऊंचा स्तर है, प्रेम के थोड़ा सा पहले। Was I really in ecstasy, or was it just a sentiment? जब मैं जप रहा था तो मैं वाकई भाव में था या कोई ऐसे ही एक इमोशन जिसको कहते हैं, एक सेंटिमेंट जिसको कहते हैं, वो था ये। So when devotees first went to Gujarat, or Surat, there was a article about their kirtan, and it said that they were ecstatic. They were chanting in ecstasy, dancing in ecstasy. तो भक्त लोग बहुत वर्ष पहले जब सूरत गए थे प्रभुपाद के साथ में, तब एक लेख आया था अखबार में कि ये जो हरे कृष्ण के भक्त हैं ये कीर्तन कर रहे थे और ये भाव विभोर हो चुके थे। And there was one member of the Gaudiya Math who wrote to the newspaper and said that these devotees are very young. They're not on the level of Baba. That was not ecstasy. You can't say that was ecstasy. गौड़िया मठ के एक संत ने उस अखबार को लिखा कि ये जो भक्त थे ये तो बहुत जवान हैं, ये कहाँ से भाव के धरातल पर हो सकते हैं। And so they read that article to Prabhupada. तो वो जो संदेश था उसको उन्होंने प्रभुपाद को पढ़कर सुनाया। And Prabhupada said, no, we were in ecstasy. तब प्रभुपाद ने कहा, गलत है ये, हम वास्तव में भाव विभोर थे। So what's going on there? तो ये क्या हो रहा है? That ecstasy is being bestowed upon people who are not qualified, who are not on the level of Baba. भाव में मिलने वाला आनंद जो है वो बांटा जा रहा है उन लोगों को जो उसके लायक भी नहीं है। That is how you understand the mercy of Mahaprabhu. इस तरह से समझिए आप महाप्रभु की कृपा को। And you may remember, Prabhupada said even a dog can take part in the chanting. आपको याद है होगा कि किस तरह प्रभुपाद कहा करते थे कि एक कुत्ता भी जप करने में हिस्सा ले सकता है। Anyone can take part and dance and chant in ecstasy right from the beginning, from the first moment that they begin chanting. कोई भी शुरुआत में पहली बार में ही कैसा भी क्यों ना हो जप के उसमें आनंद विभोर होने की योग्यता रखता है, कोई भी क्यों ना। So that's amazing. That bhav is being bestowed upon any man or woman on the street if they're willing to take it without any qualification. कैसा अद्भुत भाव है ना ये कि कोई स्त्री हो या पुरुष हो सड़क के ऊपर, उनको ये भाव मुफ्त में उपलब्ध है यदि वो हिस्सा लेने में, कीर्तन के अंदर हिस्सा लेने के इच्छुक है। And that has never been done before Mahaprabhu. महाप्रभु से पहले ये कभी नहीं किया गया।
Okay, we're going to open up the treasury for the first time, and we're going to take everything out of the treasury, and we're just going to give it to everybody. It doesn't matter if they deserve it or not. ठीक है, तो अब हम खजाना खोलेंगे और खजाने में जो भी कुछ है हम उसको लुटा देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिसको मिल रहा है वो लायक है या नहीं। That's it. बस यही है। Any questions? तो भक्तों का कोई प्रश्न हो तो कृपया अवश्य पूछिए। Otherwise, we'll wait a minute for questions. Otherwise, I can read some more things. While the questions come, Maharaj, if you can continue reading, and then I'll, because from YouTube they'll copy paste and then get it here. You have people listening on somewhere else? This is a Zoom platform. People are listening on YouTube. Oh, okay. Yes, so they will copy paste and bring it on this chat box, and then All right. How many people? All from Bangalore or all over the world? Facebook. We are close to 200 right now on YouTube and Facebook combined. Oh, nice. And your Facebook, Maharaj, is also there, and YouTube, Facebook of Sri Jagannath Temple. All right. Okay. I can read. If You read, Maharaj, first, please. Okay, so I'm not sure what verse this is from. मुझे नहीं पता ये कहाँ से है ये श्लोक। Chaitanya Charitamrita. How powerful is the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu? कितनी शक्तिशाली है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। Without even inquiring about the king, the Lord made everything successful. Without even inquiring about the king, yes, King Prataparudra. ओ प्रताप, कितनी शक्तिशाली है महाप्रभु की कृपा की जब महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और महाराज प्रताप रुद्र उनसे संपर्क साधना चाह रहे थे, बिना प्रताप रुद्र महाराज के पता किए बिना भी वो कृपा बंट गई। In other words, he gave Maharaj Prataparudra mercy. It just happened automatically. He refused to give mercy, and then at one point it was automatically given. तो महाप्रभु बाह्य रूप से दिखाते हैं कि वो कृपा नहीं दे रहे हैं, पर अपने आप ही वो कृपा अंदर से बटे जा रही है। Questions have started coming, just for your information. So once you are done, questions have started coming. Once okay. Let me see. Chaitanya Mahaprabhu's mercy is so automatically. चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है अपने आप ही बढ़ती है। If a person renders loving service to Krishna, it never goes in vain. यदि कोई भगवान कृष्ण की भक्तिमय सेवा करता है तो ये कभी भी बेकार नहीं जाएगी। Whoever takes to the chanting of the Lord's name is immediately elevated to the transcendental position. कोई भी आदमी जब भगवान के नाम लेता है तो तत्क्षण यानी उसी समय वो आध्यात्मिक पद पर भेज दिया जाता है। A student of Krishna consciousness must receive Mahaprabhu's mercy, then his service will quickly succeed. जो कृष्ण भावनामृत के विद्यार्थी हैं उन्हें अवश्य महाप्रभु की पहले कृपा प्राप्त करनी चाहिए, फिर वो सेवा में आगे बढ़ पाएंगे। And all the devotees, when they saw that he got the mercy, they were all just glorifying the mercy of Mahaprabhu and they're saying, just see, this is amazing. तो ये उदाहरण है जगन्नाथपुरी के राजा को किस तरह चैतन्य महाप्रभु ने कृपा दी। तो राजा को बाह्य रूप से महाप्रभु दूर रखते थे, अंतर से उसको कृपा दे रहे थे। तो जब उसको कृपा मिल गई तो सारे भक्त इतने आश्चर्यजनक हो गए कि देखो ये कैसे कृपा पहुंच रही है, ये महाप्रभु की कृपा है। So the point Prabhupada's making in the purport is if you just get a little mercy of Mahaprabhu, it will
It's all you need. It'll totally transform your spiritual life. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर थोड़ी सी कृपा चैतन्य महाप्रभु की आपको मिल जाती है तो ये आपके आध्यात्मिक जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित करके रख देगी. जय. Okay, question time. Many questions, so I will be quick. Shreyas Prabhu is asking, should we aspire for becoming sadhana siddh or wait for kripa to come to become kripa siddh? Both. तो प्रभु जी का प्रश्न था कि हमें साधना सिद्ध होने की इच्छा रखनी चाहिए या कृपा आएगी इसका इंतजार करना चाहिए. तो महाराज का उत्तर है कि हमें दोनों करना चाहिए. Okay. You serve, but you expect more mercy than you deserve. जय. महाराज बता रहे हैं कि आप सेवा करो पर अपेक्षा रखो कि जितनी उस सेवा के अनुपात में कृपा आनी थी उससे ज्यादा आएगी, उससे अधिक आएगी. हरि हरि. ऋषभ गुप्ता. And you can pray for that mercy also. Pray for more than you deserve. आप उस कृपा की भी प्रार्थना करो जिसके आने पर आपको जो फल मिलेगा वो जितने आप योग्य हैं उससे ज्यादा मिलेगा. ऋषभ गुप्ता प्रभु is asking the question, will the people who are observing Ekadashi but not doing bhakti daily go to Vaikuntha as per confirmation in the glory of Ekadashi? I'll have to talk to Vishnu about that. ऋषभ प्रभु का प्रश्न था कि आज जो लोग एकादशी का ऐसे व्रत करते हैं पर भक्ति नहीं करते हैं तो क्या वो वैकुंठ जाएंगे? If that's why they're doing it, it's not. If they're doing it to develop love for Krishna, but if they're just doing it to go to Vaikuntha, why would Krishna? I mean, Krishna can do anything, of course, but it's the wrong way to approach it. तो उत्तर यहाँ पर आया है कि यूं तो कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं लेकिन अगर वो इस एकादशी को कृष्ण प्रेम को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं तो ये वहां पहुंचने का कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है. It's not pleasing to Krishna, that's for sure. आप पहुंच भी सकते हो लेकिन ये कृष्ण को मजा नहीं देगी, ये चीज आनंद नहीं देगी उनको. There is a question from Veer Krishna Prabhu. If all are qualified to get mercy of Lord Chaitanya, then what is the significance of individual qualification in spiritual realm? तो प्रभु जी का प्रश्न कि well, it's like the way I would look at it is like, let's say the Indian government just said, okay, we're building 100 campuses of IIT, and without any qualification, we'll let you become a student in IIT. तो वीर कृष्ण प्रभु का प्रश्न था कि अगर सभी चूंकि कलयुग में गिरे हुए हैं तो हम सभी योग्य हैं महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के, तो फिर एक व्यक्ति की साधना उसके प्रयास की क्या कीमत है? तो उत्तर प्रारंभ हुआ है कि आप कल्पना कीजिए कि भारत की सरकार ने 100 IIT खोली और कहा बिना किसी एंट्रेंस के, बिना किसी परीक्षा के सब आ जाओ. Okay, now you're in the school. You have to do something. तो अब आपको कुछ करना तो पड़ेगा. So Mahaprabhu's mercy is, here's a holy name, you're not qualified, but we're going to give it to you, and you don't have to pay for it. तो महाप्रभु की कृपा है कि ये है महामंत्र, तुम्हें इसके लिए कोई कीमत नहीं देनी है, तुम इसे स्वीकार कर सकते हो हालांकि तुम लायक नहीं हो. You have to take the holy name without offense. लेकिन फिर वही हरि नाम जो है बिना अपराध के जपना पड़ेगा. And it will produce a result that is far beyond what anyone could get through any other spiritual practice. So you're going to get a huge result, but you have to do something. तो जब आप बिना अपराध रहित होकर इन नामों को जपेंगे तो जो ये प्रभाव देगा वो किसी अन्य आध्यात्मिक विधि से पाया नहीं जा सकता. But what's being required of you is very minimal. तो आपको अंदर आने के लिए जो योग्यता रखी है वो बहुत कम रखी है. So
It's like the way I always looked at it is like Mahaprabhu and Nityananda are giving out mercy, but you have to have your hands out and you have to take it. At least that much effort. तो मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु कृपा बांट रहे हैं, लेकिन आपके कम से कम हाथ तो आगे आने चाहिए और आप उस कृपा को रख तो पाएं. And then by doing that sadhana, you'll get way more mercy than you've earned. तो जब आप साधना करोगे तो वो कृपा आपको और अधिक आएगी जितना आप कमा नहीं सकते. But sadhana is, it's also mercy that we can even do sadhana, that we have sadhana. ये गहरी बात बता रहे हैं महाराज की साधना भी जो है ना वो भी कृपा ही है. कृपा के बिना साधना कहाँ से कर लेंगे. Did that answer the question? Or क्या ये आपके प्रश्न का उत्तर देती है चीज. I think last two questions I will take. Chaitanya Mahaprabhu is giving prema for free. So why jivas don't understand the value of this free gift? It seems that jivas tend to not appreciate what is given for free. Like in ordinary life, if we get something for free, we may not appreciate it that much. Yeah. That's partially true. And also the other reason is because they want to enjoy Maya. So they don't need the mercy. तो प्रश्न आया था कि महाप्रभु जब ये कृपा मुफ्त में बांट रहे हैं योग्य और अयोग्य सभी को, तो लोग इसकी सराहना क्यों नहीं करते हैं, लोग इसको धारण क्यों नहीं करते हैं. तो But Mahaprabhu understood that if I charge for it, no one will pay for it. So they won't. More people will get it if it's free, but still some people won't take it, because not so much because it's free, it's because they don't want it. They want Maya. तो प्रश्न का एक हिस्सा रह गया था कि लोग इसको लेना नहीं चाहते हैं. तो महाराज ने उत्तर दिया कि एक बात तो है आंशिक रूप से कि लोग लेना नहीं चाहते हैं, पर दूसरी बात यह भी है कि वो माया को भोगना चाहते हैं अभी, इसलिए वो इसको नहीं लेना चाहते हैं. तो महाप्रभु की कृपा उपलब्ध होने पर भी ये लोग लेते नहीं. There's another answer also. एक और उत्तर भी है. Kali Yuga has made us very stupid. कलयुग ने हमें बहुत बेवकूफ बना रखा है. We prefer Maya over Krishna. हम कृष्ण की बजाय माया को ज्यादा. We prefer little Krishna and a lot. Not too much Krishna, just enough. तो हम जो है अपने पर माया पर बहुत भरोसा रखते हैं, कृष्ण पर ज्यादा भरोसा नहीं रखते हैं, बस ठीक ठाक. I just want enough Krishna that I won't go to hell. And I want as much Maya as I can get. मुझे इतनी ही कृष्ण की कृपा चाहिए कि बस मैं नरक में नहीं जाऊं, यहाँ रहूं और खूब सारी माया को भोगूं. ऐसे लोग सोचते हैं. That's the intelligence of Kali Yuga. ये कलयुग की होशियारी है कि बस नरक में नहीं गिरूं, बाकी यहाँ रह के भोगूं. Beautiful answer, Maharaj. All glories. There is Mukesh Vishal Prabhu is asking, I think it's a tough nut, on whom we should be most dependent for mercy, Lord Krishna, Lord Chaitanya, Nityananda Prabhu, Radharani, or Vaishnavas. Well, one time Prabhupada said, you pray to your spiritual master, or if you're not initiated, you pray to Prabhupada. Then you can pray to Nityananda, and then you pray to Nityananda, you can pray to Lord Caitanya, and you pray to Lord Caitanya, you pray up the disciplic succession. So the answer is yes, all of them, but each one can give you the mercy of the next. हरि हरि. सो प्रश्न आया था कि हमको सबसे ज्यादा किसकी कृपा पर निर्भर रहना चाहिए, भगवान कृष्ण की, चैतन्य महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, श्रीमती राधा रानी की, या वैष्णवों की. तो उत्तर आया है कि आपको आपके गुरु की कृपा पर निर्भर होना होता है. यदि गुरु नहीं है तो आप श्रीला प्रभुपाद की कृपा पर निर्भर होइए. प्रभुपाद की कृपा होगी तब नित्यानंद प्रभु की कृपा आएगी, नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा आएगी,
तब राधा कृष्ण की कृपा आएगी। तो एक तरह से पारंपरिक तरीके से जब आप करेंगे तब कृपा आएगी। तो सभी But, इसमें आवश्यक है। सॉरी। but when you get Mahaprabhu's mercy, then you'll get the mercy of Radha Krishna. You get all the mercy. It comes. It's part. It's the mercy is one, and it's just they're all delivering the same mercy. But Mahaprabhu will give you all the mercy you want. तो एक ही कृपा है, ये सब वही कृपा बांट रहे हैं, लेकिन जब महाप्रभु की कृपा आ जाती है तो राधा रानी और कृष्ण की कृपा आ जाती है, क्योंकि महाप्रभु में ही समस्त कृपा समाहित है। वीर कृष्ण प्रभु says he got his answer. Okay. Okay. But Nityananda is more merciful than Lord Chaitanya. हरि 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 हरि। नित्यानंद प्रभु जो हैं वो चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा दयालु हैं। So, and by his mercy, you'll understand Radha and Krishna. नित्यानंद प्रभु की कृपा आएगी तो आपको समझ में आएगा कि राधा और कृष्ण कौन है। It was Nityananda Prabhu who delivered Jagai and Madai, so his mercy goes all the way down to the lowest. नित्यानंद प्रभु थे वो जिन्होंने जगाई मधाई का उद्धार किया, जो कि And the बहुत guru के नीचे के तगमे के लोग थे, दर्जे। represents Nityananda's mercy. और गुरु जो होते हैं वो नित्यानंद प्रभु की कृपा को रिप्रेजेंट करते हैं। It's all one. तो ये है तो एक उस तरह से। But So Maharaj, there are questions coming in. However, because it's time and we really thank you, His Grace Mahatma Prabhu, for amazing. I think there couldn't be a better summation of our 12 hours of marathon of Namarasa. And I had this desire that new people learn why Lord Chaitanya. I think it was a conclusive outcome that I had desired, and by your mercy, it has come to fruition. So thank you. Thank you so much. Thank you. My pleasure. हम सभी भक्त, प्रभु जी, over to you, Uttam Damodar Prabhu. Hare Krishna. Please accept my obeisances, Maharaj. Jai. Thank you very much, His Grace Mahatma Prabhu, for all the wonderful explanation that you gave us. It's so nice to see you, Prabhu, and we will look forward to having you sometime in Bangalore soon after the lockdown is lifted. Yeah. But from the bottom of our heart, yes, it's time for you to be in Bangalore. Bangalore was the last place before I came to America. That's where I left from. And that should be the first place when you come back, Prabhu. Thank you very much from the bottom of our heart, and on behalf of ISKCON Sri Jagannath Mandir and our President, His Grace Anukul Keshav Prabhu, we thank you for joining us and enlivening all of us. We are very thankful to you. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. I would also like to thank His Grace Radhapati Prabhu for that wonderful translation. Prabhuji, aapka translation, I'm sure it is just out of the world. मैं हिंदी में उसको translate नहीं कर पाता, but आपका translation इतना अच्छा है कि कोई इससे बेहतर नहीं कर पाएगा. तो आपका भी खूब धन्यवाद. And then maybe I'll request Radhapati Prabhu to now take over from here so that we can have the conclusion of this program, the wonderful Namras program that we had for 12 hours of Hare Krishna Maha. Thank you very much. Over to you, Radhapati Prabhu. तो हमारा जो सुबह 8